बच्चों, let us look into the question. The question says we have to choose the incorrect option, and the option first says Frederick Mischer in 1869 identified DNA as an acidic substance and named it nuclein. Erwin Chargaff said the ratio between A and T and G and C of dsDNA are constant and equal to 1, which is true. The other statement says the two strands of dsDNA are complementary to each other, and the fourth statement says none of the above. So the key concept that we will be discussing, it is the discovery of genetic material. Alright, let us look into it. तो जेनेटिक मटेरियल की जब हमने डिस्कवरी को देखा, we understood the discovery of what exactly the genetic material is. Either it is protein or it is either protein or RNA और DNA. तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए गए थे, एंड दे इंक्लूडेड द फर्स्ट वन व्हिच वाज कैरीड आउट बाय द फ्रेडरिक मिस्चर. ही सेड दैट द डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस, और उसको नाम दिया इन्होंने न्यूक्लिन. न्यूक्लिन that was obtained from the nuclei of pus cells by Frederick Mischer in 1869. उसके बाद what we saw that Franklin and Winklin, they said that through X-ray diffraction, they told us about the structure of DNA, that it is coiled structure, and they are either two-stranded, they are made up of either two strand or three strand. तो यहाँ तक इन्होंने डिस्कवरी की. पहली डिस्कवरी फ्रेडरिक मिस्चर, जिन्होंने बताया कि न्यूक्लिन एक एसिडिक सब्सटेंस है डीएनए, और उसको नाम दिया उन्होंने न्यूक्लिन. ऑलराइट, दैट नेम वाज न्यूक्लिन. उसके बाद रोजलिंड फ्रैंकलिन, हु वाज अवॉर्डेड सेवरल प्राइजेस फॉर दिस डिस्कवरी, एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज करके उन्होंने बताया कि जो स्ट्रक्चर है वो कॉइल्ड है, उसमें 2 या 3 स्ट्रैंड है. ऑलराइट, अप टिल देन, आफ्टर दैट एरविन Chargaff, he said that the pyrimidine and purine ratio is constant throughout the strand, is constant throughout the DNA, constant throughout the DNA. Apart from that, इन्होंने बताया कि always this purine pairs with pyrimidine and pyrimidine always pair with purine. Apart from that, purine never pairs with purine and pyrimidine never pairs with pyrimidine. यानी कि A पेयर करेगा या तो T के साथ, और A in the case of RNA it will be pairing with U, और G हमेशा पेयर करेगा C के साथ. The number of bond between A and T it will be 2, and the number of hydrogen bond between G and C it will be always 3. Alright. उसके बाद what we saw that Watson and Crick model came into action, एंड जब वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की खोज की गई, उसके दौरान हमें बताया गया कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो उसमें जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनकी पोलैरिटी अपोजिट है, एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. So this was a discovery made by Watson and Crick model based on the previous propository models given by Franklin Winklin, Erwin Chargaff, and Mischer. He said that DNA is a double helix structure. So we can see that all the statements are correct. तो हम कह सकते हैं कि option D is correct, that says none of the above. We can say that option D is correct. Hope you all understood. All the best.